clarification from the Honorable Finance Minister. She should give us a line and tell us the income tax, CBI, ED, नेचुरली करप्ट पार्टी ओरिजिनल बड़ा क्लेम करते हैं उनकी है, तो ये बता दे कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का क्या हुआ, डर्टी डजन का क्या हुआ। स्पीकर सर, मैंने पिछली बार बोलते हुए ये कहा कि ये मोदी जी की सरकार है और ये अपनों को भी नहीं छोड़ती। इसी सदन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीएम सिद्धेश्वर थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ। 80 करोड़ रुपया जो है उससे भारत सरकार ने लिया। ये मोदी जी की सरकार है। यदि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग चोरी करेंगे तो उनके ऊपर भी इनकम टैक्स होगा, ईडी होगा। और जो राहुल गांधी जी के ऊपर है वो चिदम्बरम साहब का पीएमएलए एक्ट है, जिसके कारण उनके ऊपर जो है ईडी का केस चल रहा है। ओके ओके, हाँ, every time, Mike sir, yes sir, every time honorable chair allowed Nishikant Dubey to speak. Whenever he spoke in the house, he spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this house. आपके माननीय सदस्य ने कहा, sir, 1 minute sir. Priyanka Gandhi ji, not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Advani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. He every time he is telling this galat baat. You are allowing that out. You are allowing that. Okay. No. आप Okay, please. Okay, आप conclude कीजिए। Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended, and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें। जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She's not a member. Sir, she's not a member of this house and she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. Okay. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोचते हैं? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this is last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the Honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे। So BJP with full humility, I quote Amit Shah ji only, कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है। That's all I say. Thank you very much, sir. आप बैठे अनऑफिशियली डिबेट बंद कर दो इस सदन में। माननीय मैं